वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ रिंग थ्योरी। हमने फर्स्ट लेक्चर में रिंग थ्योरी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रिंग थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेकंड ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लिकेशन, एंड वी आर गोइंग टू सी सम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड देन वी विल कम टू द यूनिकनेस ऑफ यूनिटी एलिमेंट एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, so let us start this lecture by writing a theorem that defines the rules of multiplication. Okay, so we have a theorem 12.1, and this will define some rules of multiplication. Okay, so this theorem says that let A, B and C belong to a ring R. Okay, then we have the following. The first one is about the multiplication by zero element. This zero denotes the additive identity. Okay, so जब भी हम additive identity को किसी भी ring के member से multiply करेंगे तो हमेशा हमें वापस additive identity ही मिलता है. This is what we want to say. Okay, that is equals to zero. Let me write this कि any element multiply by additive identity is equal to additive identity. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू से. नाउ जब हम रिंग की बात करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्पिटिटिव हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमने ये दोनों लिखा है. ठीक है, तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में हमें वापस एडिटिव आइडेंटिटी ही मिलेगा. अब एडिटिव आइडेंटिटी बोलने का मीनिंग क्या है कि हम फर्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा आर प्लस मल्टीप्लीकेशन. ये क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन है और सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हम बार बार फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन नहीं करें. अदरवाइज इन जनरल यू विल ऑलवेज हैव आर स्टार वन एंड स्टार टू ऑपरेशन लाइक दैट. ओके, तो जो फर्स्ट ऑपरेशन का जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी है. ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन हमें एडिशन नहीं दे रखा है तो ये रूल को हम कैसे लिखेंगे कि एनी एलिमेंट फ्रॉम द रिंग मल्टीप्लाई बाय द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन will always be equal to the identity of the first operation star 1. ठीक है, so this is the you can consider it as a generalization of these two operations. Now let us come to the proof of this particular statement. और जब हम इस थ्योरम के हर एक स्टेटमेंट के प्रूफ के बारे में बात करेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये बस एक सिंपली मैथमेटिकल प्लेइंग है. हम केवल जो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उनको ही यूज कर रहे हैं और उनको यूज करके वी आर जस्ट प्लेइंग विद दी नोटेशंस ओनली. ओके, अब हमें एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में ये पता है कि जब भी ये रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होता है तो वापस वही एलिमेंट आता है. ठीक है, सो लेट 0 बी दी एडिटिव आइडेंटिटी, देन आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कंडीशन है वही मैं लिख रहा हूँ ना, डेफिनेशन है. हम इस जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे वापस हमें वो एलिमेंट मिलेगा जिसके साथ हम ऐड कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हम A0 ले रहे हैं. ठीक है, A0, देन वी विल हैव A0 राइट. नाउ अगेन क्योंकि हम कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट के साथ हम अप्लाई करें तो जीरो को क्या हम 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको वापस ऐड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा.
And again, क्योंकि this is the addition and here we have the multiplication, so this simply defines the distribution of multiplication over addition. So we can write this as a0 plus a0. हाँ, ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? This is due to the multiplication is distributive over एडिशन, राइट। और ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ से मिली है? ये हमें रिंग से मिली है, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट 0 टाइम a0 दैट इज इक्वल्स टू a0 प्लस a0, राइट। अब क्योंकि ये रिंग है तो अबिलियन ग्रुप तो होगा ही एडिशन ऑपरेशन के साथ, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज 0 प्लस a0 plus minus a0 that is equals to a0 plus a0 and plus minus a0, ठीक है। एंड अगेन क्योंकि जो ऑपरेशन है एडिशन वो एसोसिएटिव भी है, सो यू कैन राइट 0 प्लस a0 minus a0 equals to a0 plus a0 minus a0, right? And this will implies that this will be equals to 0 and 0 plus 0 will be 0. And again, we will have this one is 0 and again a naught plus a0 plus 0 is equals to a0, right? So this implies 0 is equals to a0. तो अगर हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 0 ही मिल रहा है, दैट वी हैव सीन। और ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? सिंस एडिशन is associative, right? Similarly you can write we can have the second one, that is 0 time a is equals to 0, है ना? 0 time a is equals to 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हमने प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? we can write 0 plus 0 time a is equals to 0 time a, and again this will be equals to 0 plus 0 time a, and that is equals to 0 a plus 0 time a. So this will implies 0 plus 0 time a is equals to 0 time a plus 0 time a. Now again you can apply the additive inverse on both sides, so we will have 0 is equals to 0 time a. So thus we will have that a0 that is equals to 0a is equals to 0. So this is the first statement of this theorem. हमें ये दिखने में सिंपल ही लग रहा है, बट स्टिल हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, इसको लिखना कैसे। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट एंड इट सेज a टाइम माइनस b is equals to minus a time b and that is equals to minus of ab, ओके। अब ये सिंपली जो प्लस माइनस है वो ही नहीं है, इसके अलावा भी हम इसे और तरीके से भी देख सकते हैं। वो क्या है? अब ये जो पहला मल्टीप्लिकेशन है ये डिनोट कर रहा है a का मल्टीप्लिकेशन विद द एडिटिव इनवर्स ऑफ b, है ना। और ये डिनोट कर रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ a टाइम b, एंड दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर सिंपली जो हम देखते हैं हमेशा वो नहीं है, यहाँ पर माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है एडिटिव इनवर्स को, ये माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए को, और हम कह रहे हैं कि इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन हमेशा अल्टीमेटली बी दी एडिटिव इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू प्रूव, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सम properties of inverse and the identity element, okay। So we know that पहले हम a minus b is equals to a minus of a b ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो पहले हम ये प्रूफ करने वाले हैं, that is equals to minus a b, right। So इसको प्रूफ करने के लिए वी आर हैविंग a माइनस b एंड हियर वी आर यूजिंग प्लस a b, ठीक है।
अब क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसी पर, तभी तो ये दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट हो रहा है. सो वी कैन राइट दिस एज ए माइनस बी एंड प्लस बी. ऑब्वियसली दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी. तो जब भी ये दोनों ऐड होंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा. सो दैट इज ए टाइम जीरो. एंड ऑफ कोर्स अभी जस्ट हमने प्रूफ किया ए टाइम जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज फ्रॉम वन. ठीक है. अभी जब आप हम ऐसे सारे स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं तब तो हम लिख रहे हैं यहाँ फ्रॉम वन. और अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, सिंस जीरो इज additive identity, right? You will write that. So this implies that a minus b plus ab is equals to 0. Now you can apply the additive inverse of ab. So we can write this as a minus b plus ab. And we are adding the additive inverse of a and b. So that is equals to additive inverse of ab in 0. ठीक है. So we have this one. Now again we can use the associativity of addition. So we can write a minus b plus ab and plus minus ab. Okay. And of course this will be equals to minus of ab, and this will implies that it will be equals to 0 क्योंकि यहाँ पर जो भी quantity है that represent the additive inverse of this quantity. Okay, so we will have a minus b, a time minus b, that will add into the 0 and it is equals to minus of ab, and of course this is equals to a minus b is equals to minus of ab. So this is the proof, and in a similar way we can prove. Similarly we are going to prove that minus of a time b is equals to minus of ab, and in that case these all three quantity will be equal. Now माइनस ए बी जैसे हमने माइनस बी के साथ एसोसिएटिविटी अप्लाई की थी, अब हम बी की एसोसिएटिविटी दोनों पर अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो वी नो दैट माइनस ए टाइम बी माइनस, you can write minus plus ab is equals to, now you can see you can take b as a common factor, so you can see minus a plus a time b, and again this is equals to 0 time b, and this will be equals to 0. So this implies that minus a b plus ए बी इक्वल्स टू 0. एंड क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर हर तरीके का ट्रीटमेंट और हर तरीके का स्टेप लिख चुके हैं, सो यू कैन सिंपली राइट फ्रॉम हियर दैट माइनस ए टाइम बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी following similar to above. ठीक है. So this is how we can get all three quantity in the equivalency. So thus we have that minus a b that is equals to a time minus b, and that this will be equals to additive inverse of product of a and b. So this is about the second statement.